Hi guys, welcome back to class of learning. You're with RAHUL Sharma, your friend and guide, and this is your last series for first year students. So first year students की बात की जाए तो we do have MG 1, 2 and 4. सर सिर्फ 3 का मॉक टेस्ट पेपर 1 रह गया था जो आपके लिए था और ये इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा. Then we're going to start for the second year students. Let's start the class. लेकिन उससे पहले कुछ चीजें क्लियर कर लें. पहली चीज, क्या सर ये मॉक टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे? बड़े सारे क्वेश्चन आने दिमाग में हो चुके कि सर हम पेपर कर लेंगे, पेपर करने के बाद क्या आप सॉल्यूशन डिक्लेयर करेंगे, डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए सीरीज शुरू करेंगे. डेफिनेटली सीरीज शुरू करेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे पेपर्स की. Yes, we're going to start a series जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि सारे आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे वर्कआउट किया जाएगा. उसकी डिटेल में आपको पूरी दूंगा, जिसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल गेट द डिटेल्स टू. टिल देन हम वर्कआउट करते हैं आज की क्लास में एमजी 3 के लिए जैसा पेपर आने वाला है, आप कैसे पेपर को करेंगे और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी इस पेपर को तैयार करते हुए. तो गाइस पहले के लिए जब बात की जाती है ब्रिटिश नॉवल की तो हम इसको दिमाग में रख लेते हैं दैट इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर. यस, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर, लेकिन यहाँ पे लिखते हुए कुछ चीजें दिमाग में रहनी चाहिए. अगर वो चीजें दिमाग में है देन यू आर गोइंग टू स्कोर मैक्स इन दिस. इससे पहले आगे बढ़ने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज फॉर एमईजी नो वन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ क्लासेस ऑफ लर्निंग. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज जाके वीडियोस में बच्चों से रिव्यू चेक करें. एंड देन डू वन थिंग, आपने करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद ही सारे क्वेश्चन ऑन टिप कर लेने. रिमेनिंग 4 पेपर्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, Master's Degree Program in English, Term and Examination Mock Test Paper number 1, MEG 3, British Novel. Time 3 hour, maximum marks 100. Note 1, answer any 5 question. कोई 5 क्वेश्चन यहाँ से बने. All questions carry equal marks. इस पेपर में कोई भी कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं है, जैसा MEG 2 में हमने देखा कि एनोटेशन का क्वेश्चन आता है. Come to the basic. The very first question. Comment on the new issues which are emerged in the 18th century. I repeat, comment on the new issues which are emerged in 18th century. So guys, I'm writing on the board. आप लिख सकते हैं. पहले मैं हर क्वेश्चन को बोलूंगा ताकि आप सुन पाए आराम से. First up we are having comment on the new issues which are emerged in the 18th century. दिमाग में जो चल रहा है कि सर क्या हमें उन इरा के बारे में या राइटर्स के बारे में जानना है, तो उसका जवाब मिल गया होगा स्टूडेंट्स को कि यस यू नीड टू नो अबाउट द इराज. उन इरा में क्या चेंजेस है उनके बारे में जानना है, राइटर्स के बारे में जानना है. तो ये पेपर उतना भी इजी नहीं होना जितना आप लोग मान कर रहे हैं. Then come to the second one we are having. The ultimate task of fielding Tom Jones is to unite lovers without any critique on a social order. I repeat the question. The ultimate task of finding Tom Jones is to unite lovers without any critique on social order. Do you agree? Now, the question 2.
तो आंसर आपको पता होना चाहिए, इस आंसर के लिए आपको मैं नोट्स होने चाहिए और नोट्स में पूरा क्लियर आंसर है आपके पास। द अल्टीमेट टास्क ऑफ reading Tom Jones is unite lovers without any critique on the social order. Do you agree? Then come to the third question. We are having the third one. Comment on the character of Heathcliff as a realistic one. Give reasons. So guys, the third question is comment on the character Heathcliff as a realistic one. Give reason. अब इस character को पूरा define करना और मैं बोलूँ Wuthering Heights. On the most important, you're going to have a straightforward question on Wuthering Heights. Make sure कुछ चीजें बताऊंगा आपको जिसमें से straightforward question आना है, such as Wuthering Heights. Come up to the next. The fourth question. Comment on Jane Austen's characterization of woman in Pride and Prejudice. Comment on the appropriateness of the title of the story, The Pride and Prejudice पे भी ध्यान दीजिएगा guys, please. Here we are having the fourth question. And Pride and Prejudice. So these are the first four questions of the first mock test paper, and the fifth one we are having. Discuss how George Eliot construct a web-like overlapping between the domestic front and the public sphere. I repeat, discuss how George Eliot construct a web-like overlapping between the domestic front and the public sphere. And this question is most expected this time, guys. Here we are having the fifth question. So here the fifth question again, discuss how George Eliot construct a web-like overlapping between the domestic front and the public sphere. Come to the sixth question, discuss the main themes present in Middlemarch. सर इस नॉवल को अगर आपने छोड़ दिया तो 10 नंबर गए कन्फर्म आपके। सर 10 भी शॉर्ट नोट पे आएगा, 20 भी जा सकते हैं। तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप मिडल मार्च को पहली प्रोग्राम में रखेंगे इस बार for this December 2019. Here we are having the question number 6. Discuss the main themes present in Middlemarch. तो I hope guys कि आप उसको follow कर रहे हैं and these 6 questions beyond tip जिन्होंने रिजल्ट नहीं लिखे please take the screenshot so that I can go on the other ones too.
So just a few seconds so that I can move this and move to the other part. So now time to discuss question number 7. Are we going to have to something new? Yes, this one is really important. In what way does the point of view keep varying? I repeat the question, please listen carefully. In what way does the point of view keep varying in a portrait of the artist, the young man? Illustrate with the example. हम यहाँ पे हमें उसके जो भी point of view change होते टाइम के साथ उनको define करना है. Here we have the question number 7. So here we need to rule out this question. In what way does the point of view of the keep varying a portrait of the artist of the young man? Illustrate with answer or the examples we are having. And come to the second last question, question number 8. Comment on the depiction of women characters. Comment on the depiction of women characters in the heart of darkness. Here we are having. Comment on the depiction of women characters heart of darkness. Now time to discuss the very last question of this video class, and this question is all about explain the representations. I repeat, explains the representations of the three major religions by Foster in his novel A Passage to India. So guys, these are the questions from the first mock test for British novel MG3 for this December 2019. Now अब आप लोगों ने करना क्या है, पहले क्लियर करना, सबसे पहला काम करना है जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें यहाँ पे हम हर वो चीज आपके लिए लेके आएंगे जो भी आपको डाउट था रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। तो आज की क्लास से ही आज एक वीडियो आएगी जिसमें रिवीजन 2 इशू करेंगे फ्रॉम द ब्रिटिश पोएट्री। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। पोस्ट के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें। टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बाय गाइस।